Tabung sini ha Bubagra binarini je bongni members rok borokno bosung khaksa mate hambaya faro o jaga sung mankha tini CM deputy CM tini MOTHA ni president te TW tini kibai tongo tini kusukangni samu tini kusukangni coba sung TIPRA oh hani busangui oh hao sung beba TIPRA Thansa tonang nango oh Thansa phaine rokno joto khabai khukbai khoi sung borokno tini lamsogo borokno sung tini oro manai sung bai godal phaimani bangi beba tida sungno sung belai belai ke aksama te Hamjakgwui yapara sung borobai tabu mantri ro yapalai nai hambai Haji tabu asuk layane Jotoro yang Bubagra hagi khebedi Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Ini kini pati yang kali Bubagra kali phane kali lam sogo Ini kisna khabai khubai lam sogo Maharaj kulu kisna khabai khubai lam sogo Bubagra Kathang tongoi tongai Maharaja Pradyut Bikram Maniko Debon Maniko Skango Bana to time mengi jong phia wa ta bo chengye khotam ni karon borok phaibe na kuno ke dong puila social media na hambai tai nang ni je media jotna hambai ani personal lengwai te ani family lengwai tai tini joining program lengwai puila kha hamjama tai sibai sung je wanchok mani 1000 target khlaimani aipna ta oiru je capacity tongo sini aste 120 ni capacity abo lai thangka tar mane already sung 1000 lai thangka tini je borok sopai mani moteka ta bini baina tai borok mai chai tonglai ko borok no sung kisan asinai engkai tai lamar ko phai tongo ko ekjon ta bini bagai tini je joining ni mulu de soto sung jotno saimano mane thansana sung yapre silesinai ebong ek khlaina sung lorai thainai o team meeting na sung tini be IPFT nongwai sung tini join khai amaro go ka suga go khna wala ko লামারও কাছো যাওনি তো তাবো কিছু ইনফরমেশন মায়া কো আনি থানি কোনো ইনফরমেশন করে তাও পর্যন্ত কোনো রাস্তার কাছো খা আপলোক ইনফরমেশন করে biang ni phaibe kera তাবো সিনি yang সাউথ নি ফাইবে খা গাই সিনি গণটিসা তারপরে অমরপুর তারপরে মহারাজ চেলাগা তারপরে সিনি করমছড়া তারপরে সিনি তেলেমরঙে ফাইছো ফাইবে খা টোটাল বেসে ডিস্ট্রিক্ট তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ 8টা ডিস্ট্রিক্ট সিনি Bisibak sini di division tanah perang apa ini? Bubagra phainya itu. Bubagra phainya na, tai sabsa tongoi sungguno lamsok nai. Dah pura je sopaya ga borno tam kokas nai. Tabu je sopaya tongnai ro, borno sung sini tini ni hoite join program itu rukias ba koina musu jawa. Ro pore dine phainya dine ro phaimana tabu sini MOTHA naite Thansani pokroite tabu musu welcome jatan. Nekai ta kisa kolsana musu tabu garo sung to tini joining dekha sini mega je joining tai be poribotor phainai gai emle ni bisingo tai go phainai tong as product kisu manikoni prerona bai bini Thansani message bai obono jotono tini kha Thansani phainani krungsa tongai chung chini greater TIPRA land ni chobawo chung sak no bo koroksa military koroksa sipai hisabo chung phaimano chung bologe tongmano bono ani ব্যক্তিগত go ang tongthok jago এবং angkha kaham khlayo chini broyong thum chalaung thum je phainayoro barabo chini all equivalent chung saman chini adhikar chini
जे इउनिटिनि नांमानि जतनो जों कायसा बाय कायसा अब जों युजुअली टाइप होई दङ बनि बागै दिनै जे फाइनाय त्रिपुरा मथाव जयनिं प्रग्राम फाइनाय बारावनो आं प्रेसिडेन्ट होई जतनो आं वेलकाम खालायो एवं जिनि बखावो करक एवं कक्रक अंनाय नांनाय कचंग अंनाय नांनाय जिनि कुनो कायसा चाया मानैनो जिनि बखाव तंनानि चाया अब तंख्लाय सालसाले सालसा बो एक्सपोज हम खरकसा नो जों बेमान खालायनानै एवं हामिया खालायनानै अब दै बखावो अब दाकतिनो एक्सपोज हम एवं बिनि माइनासनो मा थामो जों जे सयताव तंनानि मुचुंमानि जों जे तंनानि बागै हा खालायो अब गाहाम दङ हामियानो दङ एवं जेगुलि पेशेंट नांमानि अब पेशेंटनि बागैनो बेनि सक्सेसबो दङ एवं एचिभमेन्टबो मा दङ दिनै अर फाइनाय प्रिन्ट मिडिया रबनोबो नारानोबो कयो नारा मिनिंफुली अबनो जागा सकनानै अंथुं एवं प्रोग्राम फर्स्ट टू लास्ट जरा तंनानि बागै जतनो आं कयै आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आनिको अरनो नारावनि उद्देश्य मथाग्रा हामबाय दिनै अर बोसोर जना जयन होनाय अब एग्जैक्ट नंबर जों मायाखौ टाइम हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर हम थानसा चाहते हैं और हमें दिल्ली से निगोशिएट करना है, अगर हमें अपने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट करना है, तो हमें सब एक होकर एक आवाज़ में बात करना पड़ेगा। इसके लिए IPFT के सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, सब लोग एक होकर हमसे आज उन्होंने मर्ज किया है और आने वाले दिन में हम लोग एक संग होकर अपना ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात करेंगे। कितने लोग ज्वाइन किए हैं? आज अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑलमोस्ट 1898 ऑलमोस्ट 1900 परिवार ने ज्वाइन किया, 8000 लोग ने ज्वाइन किया। सर 1898 फैमिलीज का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। IPFT का मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया वो मिनिस्टर नहीं, एक्स मिनिस्टर है, अभी क्या ज्वाइन करने वाला है आपने? नहीं, अभी तक तो वो जब तक वो IPFT में MLA है, कोई भी IPFT में जब तक MLA है तब तक वो हमारे संग नहीं ज्वाइन कर सकते। जब वो सरकार से अपना समर्थन हटाएंगे तभी हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी हो। जब तक वो सरकार में बैठे हैं हमारे संग और सरकार हमारा डिमांड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आपकी सबकी बातचीत हुआ क्या? हमारा सबसे बात होता है, IPFT के MLA से भी बात होता है, BJP के MLA से भी बात होता है, CPM के MLA से भी बात होता है, कांग्रेस के लीडर से भी बात होता है। लेकिन हमारा पोजीशन क्लियर है कि आप जब तक हमारा डिमांड को राइटिंग में नहीं मानोगे और जब तक आप गवर्नमेंट में बैठेंगे और हमारा डिमांड को नहीं आप उठाओगे, तब तक त्रिपुरा मोथा में आपका जगह नहीं है। जिस दिन आपको आना है, आपको ये राइटिंग में देना पड़ेगा और गवर्नमेंट का समर्थन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है कि वो हमारे संग है या हमारे अगेंस्ट। सर आज থেকে কয়েকদিন আগে উপনির্বাচন হয়েছে এবং আপনারা একটা সিটে দাঁড়িয়েছেন এবং ওখানে আপনার দ্বিতীয় স্থান। সেই দ্বিতীয় স্থানে আসায় আপনারা যে পেশি নির্বাচন কীরকম মনে করছেন? ये सेकंड पोजीशन एक महीने पहले किसी को नहीं लगता था कि त्रिपुरा मोथा का कैंडिडेट भी दे सकेगा। आज हम लोग सेकंड पोजीशन में आए, वो भी 15 दिन के प्रिपरेशन में। अगर हम लोग ने ऐसे ही करके आगे भी जनरल सीट्स में 20 सीट्स के बाहर हमने वैसे ही प्रिपरेशन किया, तो मैं आशा करता हूँ कि जनरल सीट्स के बाहर भी हम 5 से 6 सीट जीतेंगे। और ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि आज हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। बंगालीज़ ने हमें वोट किया है, मुसलमान ने वोट किया है, मणिपुरी ने वोट किया है, चाय बागान ने वोट किया है। इसका ये मतलब है कि त्रिपुरा मोथा कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। त्रिपुरा मोथा सबको इंक्लूड करना चाहता है और त्रिपुरा मोथा किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं छीन रहा है। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं, किसी का राइट को नहीं छीन रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि बंगालीज़ को बांग्लादेश वापस भेज दो, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स को, जो मुस्लिम्स हैं, मणिपुरीज़ है, चाय बागान वर्कर्स है, माइनॉरिटीज़ है, बंगालीज़ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सब प्रोटेक्ट करो, EDC के अंदर, EDC के बाहर। So ruling BJP has recently, alleged that your party has not been successfully running the ADC, and there were also allegations from you earlier that there were dearth of funds from the state government. What is the current condition? And as far as which leader from the BJP has said that we are not running the ADC properly? Several of them actually. Minister Rwmkha Jamati earlier told, and then Tripura. Then they should consult the chief minister, because I am meeting the chief minister. The chief minister of Tripura is not the BJP chief minister, he is the chief minister of the whole state of Tripura. And I will tell him where the problems are. And Mr. Rwmkha Jamati should first consult his chief minister before making these statements.
because from whatever I've heard, the Chief Minister is in a reconciliatory mood. But if the ministers in his own government start making statements which are irresponsible, then it makes it very difficult for us to have a conversation with the Chief Minister of the state. I wanted to wish Manik Saraf because he's just won the election, and I want to talk to him about the problems of the ADC. If you want to make it about politics, then you will not have development. If you want to make it about development, then people like Rwmkha should realize that the Chief Minister has indicated that he wants to look at the development of the ADC. And if Rwmkha makes irresponsible statements, it puts his own party in an embarrassing position. About the tribal political landscape in Tripura, recently I've seen several political parties are either merging with TIPRA MOTHA or allying with them. A large part of IPFT will merge with you. In the coming 9 months left to the general elections next year, do you think the tribal political landscape will be entirely occupied by MOTHA? There is a talk going on that there are more people from the BJP Janjati Morcha and section of IPFT faction that is left behind from under NCD Burma are also in talks with your party. What do you think will be that? They are not in talks until they are supporting the government. Any MLA which is in talks, which is sitting with the government, cannot be talking to us. So this is very clear. We want whoever wanted to come have come. Whoever still are waiting for their term to end, well, it is for them to decide, but it will get too late because people also want to see, are you coming for position of power or are you coming because you support the cause of the people? That is very clear. So earlier you have been even repeatedly appealing for Thansa, and that too only after 1 year of your party's formation. You have earlier also said that there are attempts to break Thansa. Who do you think are doing these attempts, and how people far are you who have confident? money but no commitment. You can buy a few leaders. You cannot buy a whole community by pushing in money. And I'll tell you, when I talk about Thansa, I also would like to, through your media, say that we have never been against any community. And that's why we got tremendous support from the Bengali community, the Muslim community, the Cha Bagan and the Manipuri community in Surma. And that is because since we have come to power, no non-Tiprasa's house has been destroyed. There has been no band called by TIPRA MOTHA. We have not indulged in violence. Violence, what we are seeing, is happening in Agartala, it is happening in Melarmat, it is happening in Udaipur, it is happening in Pani Sagar. No Muslims' mosque has been demolished. No Hindus, Bengalis' properties have been damaged or threatened. No Manipuri's life has been in danger. We have been in power for over 1 year. We have actually ensured that there is no band in Tripura. There would be band every 3 months when the previous regime was there. So we have tried to bring in a sense of harmony. I myself, being the grandson of Kanchan Prabha Devi, would never want Hindu Bengalis to be sent back to Bangladesh where their lives and properties are in threat. All I'm saying is, give the tribals their constitutional rights and protection and don't take it away from the Bengalis. Give it to us separately and let the Bengalis and the general community live peacefully as well. One last question, sir. Recently, you have mentioned about political violence in the and other constituencies going on, and there were also some clashes between TIPRA MOTHA and other political parties, including the BJP and IPFT in the ADC areas. Recently, Congress leader Sudipra Brahman has appealed for all the non-BJP parties to come together on a common platform for strategic understanding regarding combating political violence and such other things. The CPM have given tacit support, saying there is no harm in talking. What is your stance? I've seen that through media. I'm yet to talk to him. Let me consider it once it comes to us. But then the fact is that ours is a very clear movement for Greater TIPRA land. And until we do not get a clear support on our demand of Greater TIPRA land, sitting with any political party will not make sense till they do not give us support for a constitutional solution for Greater TIPRA.